Good evening, class. Today we have to discuss so many points about the hereditary and evolution chapter. Okay, in previous video we have completed the hereditary part, and in next phase we have to complete the evolutions. Okay, so hereditary and evolution is a most important chapter for your 10th class because this is a very important and beneficial part of the human beings and their generations. So apart from that, we have to discuss the first step of evolutions. Why? Because in hereditary we have discussed so many things about, we have discussed Mendel's law, we have discussed sex determination capacity on the basis of their chromosomes, whether he is male or whether she is female. Okay, so in this we have to discuss that the first term is evolutions. Okay, what is the meaning of evolution? In starting chapter I already told you that what is the meaning of evolution, what is the meaning of hereditary, what is the meaning of transformations. So many things I have told you, but here evolution is a generally word derived from the Latin word. What is the meaning of Latin? Okay, in previous I told you that Latin means dead word. Okay, and dead word means which cannot be changed or altered. Okay, dead word means cannot be changed, cannot be altered, जिसको हम change या alter नहीं कर सकते हैं, that is called the Latin word. Okay, and it comes from the evolver means evolutions, which means unroll. Unroll means they show their hidden potentials and they show their descent modification, that is called unroll. Unroll का मतलब होता है कि जैसे जैसे जनरेशन हमारा इंक्रीज होते गया वैसे वैसे चेंजेस हमारे ह्यूमन बींग्स में देखने को आने लगे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द अनरोल. अनरोल मतलब उनकी जो भी हिडन कैपेसिटीज थी, जो भी पोटेंशियल थे, जो भी फिजियोलॉजिकल, जो भी एनाटॉमिकल, जो भी स्ट्रक्चर्स थे, वो सब दिखने लगे. दैट इज कॉल्ड द इवोल्यूशन. इवोल्यूशन का मतलब उनमें चेंजेस आने लगे, वेरिएशंस. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड बाय taking an examples of sequence of gradual development of complex form. complex form मतलब धीरे धीरे जो बॉडी ऑर्गन्स थे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनने लगे ऑफ लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ. ठीक है, जो हमारे सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ थे उनके बेसिस पे हमारे जो लाइफ थे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ में चेंज होने लगे ओवर द कोर्सेस ऑफ जियोग्राफिकल टाइम. हमारा जैसा जैसा जियोग्राफिकल टाइम पास होते गया, हमारे जो इवोल्यूशन थे, जो चेंजेस थे, वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में देखने को मिला. ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इवोल्यूशन. एंड वी नो दैट द इवोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड अ डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन. डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन का मतलब है कि उनमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन होते गए. ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स पहले कुछ और थे, धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप आते गए और उनके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हमको देखने को मिले. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशंस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इवोल्यूशंस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. ओके, हाउ इवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स? सो वी नो दैट इवोल्यूशन इज अ वेरी vast topic and we are studying in nowadays. So it is divided into two topics, that is called chemical evolutions and second is organic evolutions. Okay, chemical evolution is a different thing and organic evolution is a different thing. So we have to discuss one by one what is the meaning of chemical and what is the meaning of organic evolution. So first form is that chemical evolution is a very important part. Why? Because it is the formation of complex organic components फ्रॉम सिंपल कंपाउंड आर एलिमेंट्स. इसमें क्या होता है, जनरली जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लगभग सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकलकर बनते हैं. दैट इज कॉल्ड द केमिकल. ठीक है, इवोल्यूशंस. सो हियर वी हैव टू डिस्कस दैट it is the formation of complex organic compounds from the simple compound or elements. बहुत सारे छोटे छोटे से compounds या elements मिलकर एक बड़े बड़े क्या बनाते हैं, एक बड़े से compound को बनाते हैं. that is called the chemical evolutions. Okay, in next part we have to discuss that organic evolution is a very important thing. Why? Because it also play an impact role in the most of the evolution system. But before starting the organic evolution, first we have to discuss the कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. हमको केमिकल इवोल्यूशन के बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट ऑकर्ड एट द टाइम ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब होता है जब शुरुआत हुआ, व्हेन इट स्टार्टेड, दैट टाइम द केमिकल इवोल्यूशंस इज जनरली टेक देयर फर्स्ट स्टेप. ओके, नाउ सेकंड, irreversible. It means that it cannot be altered, it cannot be changed. Okay, irreversible means they cannot be replaced.
So most important point we have to discuss here, and it is a fast process. Fast process means descent with modification. जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म एक नए स्टेप में आते गए, जनरेशन में आते गए, उनमें बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस देखने को मिला और उनके modifications we have seen in a very fastly. Okay, so next the step is given by Alexander Oparin. Alexander Oparin is a well-known scientist, and he has given the chemical evolutions on the basis of their characteristic features. Okay, so apart from that, now we have to discuss that organic evolution and what is the characteristic features of organic evolution. So here we have to discuss that organic evolutions means it is still occurring. Still occurring means here it is generally formation of complex organic compounds from simple compounds or element. Same definition is generally fitted here, but now the characteristic features are generally different from both one. Okay, now first here it is occurred at the time of origin and it is still occurring. ये अभी occurring हो रहा है. Occurring means इट इज इन अ इनिशियल स्टेज. इनिशियल मतलब इनमें भी बहुत सारे चेंजेस देखने को अभी डे बाय डे हमको मिलते हैं. जैसे इज कॉल्ड द इट इज स्टिल ऑकरिंग. एंड सेकंड इट इज अ रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मींस वी कैन टेक अ स्पेशल एफर्ट्स एंड वी कैन चेंज द ऑल द सिस्टम्स एंड वी कैन आल्सो रिप्लेस बाय डूइंग देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन. हम इनमें मॉडिफिकेशन करके इनको रिवर्सिबल या इनको रिवर्स कर सकते हैं. ओके, सो here it is a fast process but it is a very slow process. Slow process means there is a also modification came but in a slow manner. इनमें modifications होते थे but बहुत slow process है. And it is given by Charles Robert Darwin. Charles Darwin is a well known and famous scientist in evolution. क्योंकि हमको इस पूरे evolutions में we have to discuss about the Darwin's law. Darwin's ने 3 law दिए थे. We will also discuss in this video, and this all the laws are very important for human beings. Okay, now next, apart from that we have discussed evolution. We have also discussed 2 types of evolution, chemical and organic, and we have also discussed the characteristics features of chemical evolution and organic evolution. Now we are going to discuss that inherited and acquired traits. Okay, inherited and acquired traits, 2 traits are generally differed. Acquired traits, we know that these are traits which are developed in an individuals due to special conditions. Okay, this can be adaptive. Adaptives are acquired मतलब इसको लिया जाता है generally by taking any several and special conditions में इसको हम adopt करते हैं. That is called the acquired trait. Inherited traits cannot be acquired. It is present since birth. Okay, most important point. Acquired traits can be adopted in a special conditions, but inherited traits can be genetically inherited from one parents to their progeny. Okay, it is present since birth and it is acquired after the birth. Okay, most important point. So apart from that we have to also take a small look of inherited traits, and also we will discuss how these traits are play an important role in human beings. So in acquired traits we have seen that the characters are generally transferred from the characters are generally not transferred from one parents to their progeny, and it is generally acquired. It means they are generally developed after the birth, but in inherited traits they are present since the birth. Okay, ये पैदा होते ही समय हमारे birth में present होता है. These are called the inherited traits, and traits में भी are generally familiar with the parents of the mother or father. Okay, so most important point, and these are the traits which passed from generation to another generation. Okay, ये generation by generation जो traits होते हैं वो transfer होते रहते हैं. That is the most important part of inherited traits. Okay, now apart from that we have to discuss that they can get transferred from parents to their offspring. Offspring is the sense of progeny. उनके जो भी बच्चे होंगे, जनरली चिल्ड्रंस होंगे, whether it is male or female, ये जो traits होंगे वो हमेशा कैरी आउट करते जाएंगे. सपोज यहाँ पेरेंट्स है और पेरेंट्स के अगर ऑफस्प्रिंग होते हैं, चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो, तो जो ट्रेड्स ये कैरी करता है सेम ट्रेड्स में ये भी कैरी करेगा और ये भी, क्योंकि ये ट्रेड्स जो है वो इनहेरिटेड है. मींस these are the traits which are generally transferred from one parents to their offspring or
प्रोजेनी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू आल्सो डिस्कस द लॉ ऑफ चार्ल्स डार्विन। ओके, हमको अब डार्विन्स के बहुत सारे सिस्टम को समझना है। सो फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड द बेसिक प्रिंसिपल्स by which Darwin has given. Okay, Darwin ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे? फर्स्ट, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब होता है, सपोज इन एनी प्लेस देयर इज अ different types of organisms are there, but there is a possibilities of the natural ecosystem in which they are made own self capable to survive benefited, ठीक है। सपोज ये एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, चाहे यहाँ पे लॉयन है, पैंथर है, ठीक है, टाइगर है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने आप को कैपेबल बनाएगा रहने के लिए। दैट इज कॉल्ड द सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस। सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल पार्ट। व्हाई? because in this only that organism are make own self benefited to survive here in a freely manner without any interfering of all the organisms. That is called survival of our existence. अब जनरली इसमें होता क्या है, सपोज दिस ऑर्गेनिज्म आर सर्वाइविंग हियर, इट मींस दैट इट कैन बी अफेक्टेड बाय लायन, इट कैन बी अफेक्टेड बाय टाइगर, इट कैन बी अफेक्टेड बाय पैंथर। सो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म इस इकोसिस्टम में सर्वाइव करेगा, इट मींस दिस शुड बी मेक ओन सेल्फ मोस्ट स्ट्रगल फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ये अपने आप को खुद बहुत पावरफुल बनाएगा ताकि वो यहाँ पे इजिली क्या कर पाए, एग्जिस्टेंस कर पाए, यहाँ पर वो रह पाए। अगर नहीं बना पाया, इट मींस दे ऑल द ऑर्गेनिज्म विल ईट देयर, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा उसको खा लेंगे। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो डार्विन्स फर्स्ट लॉ इज सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब वेदर इट इज ह्यूमन बीइंग, वेदर इट इज animals, they make own self best suited for the environment to live very smoothly। अपने आप को रहने के लिए, अपने आप को स्मूथ बनाने के लिए हमको वहां पे अपने आप को बेस्ट देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस। नाउ सेकंड, इफ these organisms are make own self benefited to survive here, that means that is the survival of fittest। इसका मतलब ये इन सारे organisms से फिट साबित हुआ और ये यहाँ पे एक्चुअल फॉर्म में सर्वाइव कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। व्हाई? बिकॉज हियर it can make own self survival for existence. After that they can also forms a fitting position here. By this all the organisms are not able to harm them. It is called survival of the fittest। इसका मतलब यहाँ पे आसपास में रहने वाले सराउंडिंग भी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो इस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। इट मींस दैट द नेचर विल सिलेक्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट एनिमल्स, whether it is animals of human beings, whether it is animals of different types of cows, buffalo and different things. So here animals may be more than, whether it is aquatic and terrestrial animals also, but natural selection means the nature will select only best organism or best animals to survive here if they have proper variation and they can change their own body language according to their ecosystem, according to their environment. They are the best suited for this environment. That is called the second law of Darwin's. And third law, the continuous natural selection leading to evolution of new species। अगर ये अपने आप को evolution करते जाएंगे, इनमें एक सबसे important चीज होगी variations की। If there is a possibilities of variation, definitely they can survive well comparison than all other besides organisms. So apart from that, in this environment influences the variation। इनमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है, the conclusion of that all three laws are environment influences the variations। इसमें सबसे important जो रोल प्ले करता है, that is called the environment, because homeostasis is a special type of condition in which the human beings makes own self best suited according to their environment. That is called homeostasis stage। होम्योस्टेटिस स्टेज में क्या होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, देयर सिस्टम्स आर जनरली चेंज अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के हिसाब से उनमें सिस्टम्स चेंज होते हैं, बट व्हेन द सीजन्स आर जनरली चेंज, द this organism cannot be affected by that type of season। Why? Because they are best adapted to this season। वो अपने आप को best adapted बना लेते हैं। That is called the natural selection of any organism and it is also called environmental influence of the variation। environment जैसा change होगा, influence वैसा ही इनमें आते जाएगा। Okay, now there is a certain demerits of Charles Darwin who has given the
evolution system, but he failed to explain the mechanism of source of heritable variations. Okay, now we are going to discuss the first one is that Charles Darwin explained the mechanism of origin of new species by natural selection. Natural selections ने इन्होंने variations के बारे में बता दिया, but they are unable to give the exact source of heritable variation in this system. उन्होंने अपने सिस्टम में इस चीज को नहीं बताया कि जो सोर्स ऑफ हेरिटेबल वेरिएशंस होता है, जो हेरिटेट होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दे आर अनेबल, Charles Darwin was unable to explain the variations of the human beings or maybe animals. Okay, after that the great scientist came into the existence and the scientist name was Hugo de Vries, the Dutch botanist. ये एक डच के botanist थे, ठीक है, डच थे, और डच is a part of, generally we know that is a special type of country there, certain Christians families are generally belong, तो ये डच botanist थे, ठीक है, and mostly he has given the exact conclusion about the Charles Darwin. According to him, heritable variations arises where there is a change in genes. अगर genes में changes होंगे, definitely the changes of variation will also occur. अगर genes में change देखने को मिलेगा किसी भी human beings या किसी भी animals में, definitely the variation will also occur. So this is the exact theory given by Hugo de Vries, a Dutch botanist, and apart from that Charles Darwin was unable to express the exact characters of genes alternation. अगर genes में alternation होगा means there is a possibilities of more variations, but if there is a not alternation of gene, it means there is a not a single possibilities of variation. वहाँ पे हमको variable या variations दिखाई नहीं देंगी. So this is all the important part of your 10th class. So you all have to focus very carefully, and if you have any doubt regarding all the topic, you can consult me. Okay, thank you students.